Hello student, now in this video we will discuss exercise. First, which of the following pairs will give displacement reaction? A. NaCl solution and copper metal. B. MgCl2 solution and aluminium metal. FeSO4 solution and silver metal. And fourth is AgNO3 solution of and copper metal. The answer is D. AgNO3 solution and copper metal. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन परफॉर्म करते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिसमें एक एलिमेंट जो है मोर रिएक्टिव होता है एंड अदर लेस रिएक्टिव. सो AgNO3 सॉल्यूशन इन कॉपर मेटल. Ag से रिएक्टिव एलिमेंट है, कॉपर मोर रिएक्टिव होने के कारण कॉपर जो है Ag को डिस्प्लेस कर देगा एंड Cu डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को परफॉर्म करेंगे. Second, which of the following method is suitable for preventing an iron frying pan from rusting? A. Applying grease, applying paint, applying a coating of zinc, and all of the above. Answer is C. Applying a coating of zinc. Third, an electric element react with oxygen to give a compound with a high metal melting point. The compound is also soluble in water. The element is likely to be, the answer is calcium. 4 food canes are coated with tin and not with zinc because answer is zinc is more reactive than tin. 5. You are given a hammer, a battery, a bulb, wires and a switch. How could you use them to distinguish between samples of metals and non-metals? The answer is metals are malleable in nature. With the help of hammer, we can beat the given sample. If it's convert into in its thin sheets, then that sample is metal, otherwise non-metals. मेटल्स की एक हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा है कि मेटल्स जो हैं वो मेलिएबल होते हैं नेचर में. अगर हम इन्हें हैमर से इन पे बीट करते हैं तो इन्हें हम थिन शीट्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं. सो ये प्रॉपर्टी जो है वो मेटल्स की होती है. अगर ये सारी जो सब्सटेंस हैं इस प्रॉपर्टी को परफॉर्म करते हैं, सो ये दीज आर दी मेटल्स, अदरवाइज नॉन मेटल्स. सेकेंड इज assess the usefulness of these tests in distinguish between metals and non-metals. The answer is these tests represent the physical properties of the metals and non-metals. We can differentiate easily by the physical property. Question 6. What are the atmospheric oxide? Give 2 examples of amphoteric oxide. What are the amphoteric oxides? Answer is amphoteric oxides are those oxides which can react with acid as well as base. Example, zinc oxide. Zinc oxide, ZnO, and aluminium oxide, Al2O3, aluminium oxide. The example of amphoteric oxide. ये ऑक्साइड्स ऐसे हैं जो कि एसिड एंड बेस दोनों से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं. सो ऐसे ऑक्साइड जो हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहलाते हैं. क्वेश्चन 7. नेम 2 मेटल्स विच विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड 2 मेटल्स विच विल नॉट. आंसर इज more reactive metals will displace hydrogen from its dilute acid, for example iron and zinc, and least reactive metals will not displace hydrogen from its dilute acid, for example copper and silver. So which metals displace hydrogen from dilute acids? The more reactive metals. Example iron and zinc. And 2 metals will
which will not, the least reactive metals, for example copper and silver. This is not react with hydrogen from dilute acids.